جی السلام علیکم۔ آج ہم فائنل ٹرم کے لیے یہ ENG301 کو ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری 103 سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہ آلریڈی ہائی لائٹڈ میں نے دے دیے ہیں، تو آپ چینل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو سے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو اب ریڈ آؤٹ کر لوں۔ یہ اس کا ایگزام اب نیکسٹ میرا اسی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ باقی سب کے لیے ایزی ہو جائے، خود سے ریڈ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی سن لے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ بس ریڈنگ نہ کرنی پڑے، بس سن لیں ہم تو ایزی ہو جاتا ہے سب کے لیے۔ تو میری ویڈیوز کو میں سلو پڑھتی ہوں، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہائی اسپیڈ پہ کر کے آپ سن لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ویسے اس کو زیادہ ہائی اسپیڈ پہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ اوپر اس کی اسپیڈ کریں گے تو آپ کو بیٹر فیل ہوگا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر 23 لیٹر رائٹنگ۔ جی تو یہ ہمارے پاس کلیم اینڈ ایڈجسٹمنٹ ریکویسٹس آئیڈیلی ایوری تھنگ رنس اسموتھلی ان دا آپریشن آف این آرگنائزیشن، نو مسٹیک، نو پرابلمس، نو ڈیفیکٹس اینڈ نو مس انڈرسٹینڈنگس۔ نیکسٹ ہے جی their complaints should not be called complaint letters، ٹھیک ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے MCQs میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں یہ رانگ رائٹ والے جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ مینس صحیح غلط والے، غلط درست جو ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور اس میں ہوتی ہیں زیادہ، اس میں دوسری چیزیں لانگ ٹرم کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ایگزام میں جسٹ MCQs ہوتے ہیں اور فلنگ بلینکس ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ غلط درست ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چھوٹی سی کوئی ڈیفینیشن وغیرہ دے دیں، اور جیسے یہ لیٹر کے کچھ پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں یہ وہ دے دیں گے آپ کو۔ اس کے بعد آپ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں فیزیبلٹی رپورٹ، یہ ہماری اسائنمنٹ بھی آئی تھی، اور یہ بھی آپ نے بہت اچھے سے اس کو دیکھ لینا ہے، اس کے جو بھی پوائنٹس تھے وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ وہاں وہ زیادہ لمبا چوڑا کچھ نہیں آتا ہے، اس میں صرف وہ آپ سے کہیں گے کہ اس میں جو پوائنٹس لکھ دیں اس کے یہاں۔ اچھا نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کاؤنٹلیس اسپیکٹس آف بزنس ڈیلنگ کین بریک ڈاؤن بٹ the most common causes for claims are، تو یہ ہماری جو کامن کازز اور کلیمز ہیں تو وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ انکوریکٹ بل، انوائس اور اسٹیٹمنٹ، بل فار مرچنڈائز آرڈرڈ بائی but never received، delivery of unordered merchandise، delivery of incorrect merchandise، delivery of damaged or defective merchandise۔ Two other more specialized types of claims are a request for an
adjustment under a guarantee or warranty, request for restitution uh, under an insurance policy. Next ये the following direct organizational plan is used to for writing claims. ये एक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है जिसके राइटिंग क्लेम्स मुख्तलिफ हैं. इसमें राइटिंग क्लेम्स कौन कौन से हैं? ये ए, ये बी है, उसके बाद ये सी है. हाँ, बस ये 3 हैं. अच्छा, तो अब इसको देख लेते हैं. डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट, ये हमारा ए है. डायरेक्ट statement of the request, justification, explanation and details. नेक्स्ट है हमारा courteous clause with request for specific action. अब इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स देख लेते हैं. Write a claim letter as soon as possible after the problems has been identified. State the need for a replacement, refund or correction of the problem. Next है maintain confident, factual, fair, unemotional tone. नेक्स्ट ये हमारे पास जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्स. तो इसमें मैंने जो है सारे के सारे नहीं किए हुए हैं. इसमें मैंने कुछ इसमें जो है चूज़ किए हुए हैं जो शॉर्ट हैं. ठीक है, आपने इसमें से जो है शॉर्ट कोई देखना है. ज़्यादा लॉन्ग वाले जो हैं उन्हें ना देखें आप. ठीक है, बाकी आप रीड आउट कर लें सारे अगर आपके पास टाइम हो. लेकिन ये है कि सबसे पहले ये कर लें जो मैंने आपको जो है ये हाईलाइटेड करके दिए हैं. ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ऑनेस्टली, क्लियरली एंड पोलाइटली. नेक्स्ट ये इसको जो है मुकम्मल तौर पे कर नहीं पाई हमें. ये हम अब कर लेते हैं. Eliminate threats, sarcasm, exaggeration and hostility. Make no accusation against any person or company unless you can back it up with facts. Use a non-argumentative tone to show your confidence in the reader's fairness. Next, if necessary, refers to documentation, an invoice, cancelled check, confirmation letters, etc. Ask the reader to propose fair adjustment if appropriate. Do not return the defective merchandise until you have been asked to do so. Courteous clause with request for specific action.
simplify compliance with your request by including your name, address, phone number, and house of availability. Uh, Note how complying with your request will benefit the reader. Consider another example that how the writer conveys his message of inconvenience in calm manner. नेक्स्ट एक लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने जस्ट एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना है। इसकी जो है देखने होते हैं ये, जैसे ये उसकी बॉडी कैसी हो सकती है, उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये उसको स्टार्ट कैसे करना है, डीएसआर से स्टार्ट किया है और साथ में कॉमा लगाया है। ये जो है ये चीज़ें लाजमी देखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं और आपके जो हैं उसमें भी आ सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ये लास्ट हो सकता है योर्स ट्रूली और साथ में कॉमा है, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं। ऑन March 1 we ordered and subsequently received one case of hand saws model 88B. We paid for the order with our check number 7293, a photograph copy of which is enclosed. When we decided to order this sauce instead of model 78B, it was the at the urging of your sales representative, Mr. Ali Naim. He assured us that the new saws were more durable and efficient than the older model. However, we have not had the saws on our selling floor for 3 weeks, and already 6 have been returned with broken teeth by extremely dissatisfied customers. We are therefore returning the entire order of 88B sauce and would like to be refunded for their full purchase price plus shipping expenses. अच्छा, तो ये बात हो रही है एक जैसे होते हैं, ये एक आरी को ख़रीदने की बात हो रही है, ठीक है। एक नहीं, उन्होंने काफ़ी सारी ख़रीदी हैं और उन्होंने आगे बेचने के लिए ख़रीदी हैं, जैसे मीन्स कंज्यूमर थे वो, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने ये वाली आरी ख़रीदी थी, और लेकिन ये है कि वो अच्छी नहीं निकली है, और बहुत सारे कस्टमर्स ने मीन्स उनकी तरफ से बहुत सारे कस्टमर्स ने उन्हें वापस कर दी है कि वो अच्छी नहीं है। उनके धंधाने जल्दी से मर गए थे, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि उन्हें जितनी उन्होंने परचेज़ की थी, जितनी प्राइस में, वो सारी उन्हें वापस कर दी जाए। ये उन्होंने लेटर उन्होंने लिखा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये उनके लेटर के बाद जो है उनका जो कंपनी का लेटर है
आंसर लेटर, ठीक है। तो वो क्या लिख रहे हैं, जब एक कस्टमर या कंज्यूमर है, कोई भी है, वो अगर लिख रहा है मीन्स जिसने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो डियर सर करेगा, ठीक है, और योर ट्रूली। और जो दूसरा जो कंपनी वाला होता है, वो क्या करेगा, जेंटलमैन और योर सिंसियरली। इस बात को आपने बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लीज़ रिपेयर और रिप्लेस माय कैलकुलेटर वॉच मॉडल। अच्छा सॉरी, ये अब जो है उसी का आंसर नहीं है, ये अब न्यू एक और चीज़ आ गई है। हम्म, अच्छा, तो नेक्स्ट आएगा इसका आंसर का भी लेटर आएगा, ठीक है, या फिर इसका नहीं होगा और किसी चीज़ का होगा, लेकिन मैंने पढ़ा है, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि किसी चीज़ का इस लेटर का था या उस दूसरे किसी का था। प्लीज़ रिपेयर और रिप्लेस माय कैलकुलेटर वॉच मॉडल C863 and send it to me at the address above. After 6 months of use, the musical alarm has quite working. Enclosed is my watch, a copy of the sale receipt showing the date of purchase, and your warranty, which guarantees materials and workmanship for 1 year. Yours sincerely. Adjustment letter. An adjustment letter is the reply to the complaint called claim letter. अब ये देखें, ये एडजस्टमेंट लेटर आ गया, मीन्स क्लेम लेटर है, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट लेटर का जो सेकंड नेम है वो है क्लेम लेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये 3 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट लेटर। When the seller is at fault, when the buyer is at fault, when the third party is at fault. अब ये देखें कि यहाँ पर वो कह रहा है कि जो सेलर, जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कि वो सॉस मीन्स आरी ली है किसी ने, ठीक है। अब वो जो है वो ख़राब हो गई है, ख़राबी उसमें आ रही है, तो मीन्स वो सेलर का डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद है बायर का डिफ़ॉल्ट। क्या हो सकता है कि वो किसी चीज़ को जैसे टूटने के बाद वो कह रहा है कि ये जो है जल्दी टूट गई है, जबकि उसको अच्छे से पता है कि वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा संभालने वाली चीज़ है, और उसको उसने संभाला नहीं और वो टूट गई है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड पार्टी है, वो जैसे कहते हैं कि क्या उसको बोलते हैं, वो डिलीवरी बॉयज़ जैसे होते हैं, लोग कहते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा आता है कि डिलीवरी बॉयज़ ने ऐसे उसमें कोई कर दिया है, उसमें 2 नंबरी, ठीक है। नेक्स्ट है ये ऑर्गेनाइजेशनल प्लान इज सजेस्टेड फॉर आंसरिंग क्लेम लेटर्स। इसमें है राइटिंग लेटर, ग्रांटिंग एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पर है हमारे पास इसके स्टेप्स, ठीक है। आपने जस्ट इसके स्टेप्स को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। टेल द रीडर दैट फुल एडजस्टमेंट इज़ gladly granted. Second, express sincere appreciation for the reader's adjustment request. Stress your organization's effort
to prevent further customer dissatisfaction. सॉरी ये था हमारे पास वर्ड डिससेटिस्फैक्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ये एंड द लेटर पॉजिटिवली। अब ये देखें कि यहाँ पर एक और लेटर है जो कि किसी के जो है सेलर ने जो है आगे लिखा है कस्टमर को, ठीक है। तो उसमें वो कह रहा है कि एक अम्ब्रेला जो थी उन्होंने ली थी, ठीक है। अब उसको उन्होंने जो है वापस सेंड किया बिकॉज़ वो जो है ठीक नहीं निकली, वो उसमें कुछ खराबी आ गई। अब कंपनी जो है वो उसको ठीक करके वापस कर रही है और वो कह रही है कि कुछ दिनों के बाद जो है वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास लेक्चर 24। ये लेक्चर 24 व्हेन द बायर इज एट डिफ़ॉल्ट, ये जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या आता है, सपोर्ट द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज योर बफर पैराग्राफ एश्योर द customer that the request is appreciated and has received individual consideration. Present the explanation before the decision. Be courteous even when answering an energy or distort claim. Try to leave the reader in a pleasant frame of mind. अच्छा, तो अब इसके जो हैं कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 बफर, 2 explanation, 3 your number means stated or implied, फोर्थ स्टेप है अ फ्रेंडली क्लोज, ठीक है। हमेशा जो भी लेटर हो उसको फ्रेंडली क्लोज करें, क्योंकि जो है वो अगर कुछ भी चीप कोई भी चीज़ जो है ना लिखें, किसके मुखालिफ कोई ना चीज़ जाए, ठीक है। बिकॉज़ ये चीज़ें जो हैं बिज़नेस में जो है कुछ भी अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए जो है इसमें जो है हमारे एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि उसमें गलत दुरुस्त में कि ये कैन वी क्लोज द लेटर अनफ्रेंडली, ठीक है। तो वो उसको आप कर सकते हैं, ज़ाहिर है रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी चीज़ थी, जी। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि एक कंपनी से बात कर रहा है कि ऑटोमेटिक डोर थे, ठीक है। ऑटोमेटिक डोर के लिए कुछ जो जैसे किसी ने उन्होंने पुर्जे वगैरह बनाए हैं, ठीक है। तो उनसे वो बात कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ ये कह रहा है कि जो एक कंपनी बात कर रही है एक कस्टमर से, ठीक है। तो ऑटोमेटिक डोर का जो पुर्जा था वो उन्होंने लिया था और वो ख़राब निकला, वो उन्होंने वापस किया है, ठीक है। तो अब जो है वो कह रहे हैं कि हम इसको ठीक करके इसको आपको दे सकते हैं, ठीक है।
और इस पे जो है कुछ जो है कॉस्ट उस पे लगेगी, कुछ लागत आएगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको पे करें और जो है हमारे साथ जो है राब्ता करें। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये भी एक लेटर है। यहाँ हम शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें पढ़ लेते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म हो चुकी है वीडियो। ऑनर यहाँ पर है, व्हेन द थर्ड पार्टी इज एट फॉल्ट, honor the customers claim with the standard good news letter and no additional explanation. Honor the claim but explain that you were not reality at fault. uh, reality नहीं, sorry, really. Next, take no action on the claim and just suggest that your customer file against the firm that caused the defect or damage. ये compromising on an adjustment, ये steps हैं उसके लिए। ये buffer explanation, no stated of implied content, counter personal or compromise, counter proposal or compromise friendly clause. Credit letters, writing credit letters जी। तो यहाँ पर है क्रेडिट, यहाँ पर यहाँ तक होगा, ठीक है। Promise of future payment in cash or kind given in exchange for goods or services is called credit. And the major reason customers wish to establish credit is the convenience. A customer can buy now and pay later। के जो कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कि वो बाय तो अभी करें लेकिन पे बाद में करें, ठीक है। अवॉइड avoid carrying cash with them or writing checks। अब वो कहते हैं कि हमें अब कैश जो है वो ना देना पड़े, ठीक है। और उन्हें चेक्स के ज़रिए से ही उन्हें पेमेंट कर दी जाए। नेक्स्ट है एक्सचेंज एंड बाय गुड्स ऑन अप्रूवल मोर इजीली। और इसके बाद जो है कस्टमर ये चाहते हैं कि उन्हें जो है वो बाय भी इजीली कर सकें और अगर उन्हें एक्सचेंज करना चाहें तो एक्सचेंज भी कर सकें। नेक्स्ट है वाइल राइटिंग क्रेडिट लेटर्स, be careful as they are permanent record and protect in case of legal difficulties। Credit letter must be courteous, tactful, and dignified. Letter concerning credit fall into these basis and categories.
letter requesting credits, letter extending credits, letter refusing credits. Next, direct statement of request phrase the opening to reflect the assumption that the reader will respond favorably to your request. Phrase the opening so clearly and simply that the main idea cannot be misunderstood. Write in a polite, understanding, personal tone. Justification, explanation, and detail. It itemize parts of complete request in numbered series. Yes, list specific questions. Don't ask questions that you could answer through your own effects. Arrange questions logically. Number questions मीन्स जो है जो भी जितने भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं उनको नंबरिंग दे दें, ठीक है. नेक्स्ट है ये वर्ड क्वेश्चंस टू अवॉइड क्लॉज अबाउट द answer your refer and not to bias the reader's answer. Courteous close with request for a specific action. Letter requesting credit. अब इसको देख लें कि उसने कहा है कि डियर मिस्टर अहमद, ये आगे कॉमा है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी डियर ट्रियोली है, योर्स ट्रियोली, ठीक है. और ये आपने लेटर जो है ये खुद रीड आउट कर लेने एक दफ़ा, ठीक है. ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बिलो. Date the account and was opened. Terms of the account, credit limits, current balance, past due amount, date of last activity, payment history, remarks. Evaluating the credit information, character, capacity, capital. Extending credit. Welcome the new charge customer and express the wish for a pleasant association. Outline a special privilege that are available. Explain the terms of payment. Encourage the customer to use the new charge account and enclose promotional material. Build goodwill by indicating for your eagerness to serve the new customers as well. Letter extending credits. ये लेटर्स जो हैं आपने एक दफ़ा रीड कर लेने खुद से, ठीक है, तो आपको अच्छे से जो है उसकी समझ आ जाएगी. नेक्स्ट ये हमारे पास रिफ्यूजिंग क्रेडिट्स हैं.
to say no tactfully, to keep the goodwill of the customer. तो यहाँ पर कुछ और भी रीजंस हो सकती हैं. लैक ऑफ एस्टेब्लिश्ड क्रेडिट, ओवर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, which may result in an inability to pay bills on time, unwillingness to pay that which is owed according to credit reporting agencies. Buffer: eliminate, apologize, and negative sounding words. Phrase the buffer to avoid misleading the reader. Uh, limit the length of the buffer. Express appreciation for the credit request. Introduce resale information. Make transition from the general to the specific. Avoid negative words such as must decline. जी, तो अभी फ़िलहाल ये बहुत लॉन्ग टर्म हो गया है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर ये 25. ठीक है. तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.